देख मैंने ना बार यहाँ सेट कर I'm दी, not giving तो अब you. तू देख ले। मैनू पता कि दुनिया नू ए गवारा नहीं हो सकता। ये तो मौके की तलाश में होती है कि कोई मुझे बस बोले और मैं बिल्कुल भी नहीं, इन लोगों ने मुझे मजबूर किया था और मुझसे ज्यादा सेट पे ये और फराज सर गाते थे मैं जब यार। हो जाऊंगा तो फिर मैं तो पूछे से पहले मैं शुरू ही इंटरव्यू गाते गाते करूंगा। So Nupur and Kunal, welcome to Big FM. थैंक यू सो मच, थैंक यू। So सब लोग आजकल यही पूछ रहे हैं पॉपकॉर्न after watching the trailer. So now tell me how much fun it was for both of you. Trailer तो बहुत ही fun लग रहा है देखने में, but how much fun it was for both of you to shoot this series? You know, it's always firstly when you're doing a comedy, the idea is to have fun so that it translates onto screen and then you can watch it. And it's वो सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप ऐसे लोग इस तरह की कास्ट के साथ काम कर रहे हैं जो ना सिर्फ दिग्गज हैं but they're iconic and legendary in their own way. और वो फन एक तरह से डबल भी हो जाता है लेकिन वो फिर भी रिस्पेक्टफुल दायरे में रहता है क्योंकि जब आप हम उम्र लोगों के साथ काम करते हैं तो अब फिर आपकी एक अलग मस्ती चलती है। लेकिन ऐसा लगता है इनके साथ तो ऐसा लगता था कि हमसे भी जवान या हमसे भी छोटे हैं क्योंकि जब ये लोग मिलते थे और इनकी अपनी बातें शुरू होती थी, इतने सारे किस्से, इतनी सारे मजेदार इंसिडेंट्स दैट दे वुड शेयर एंड दे वुड टॉक अबाउट। और ऑन स्क्रीन जब आप काम कर रहे हैं तो इतनी सारी इम्प्रोवाइजेशन कि ऐसा करते हैं, अरे नहीं वैसा करते हैं। सो इट्स जस्ट वो पता भी नहीं चलता था कि दिन कब निकल गया या सीन खत्म हो गया। तो मुझे लिटरली इफ यू टेल मी कि पॉपकॉर्न की एंटायर शूटिंग गोज लाइक दिस, एक चुटकी बजाते ही ऐसा लगा सब खत्म हो गया। You know, when you actually shoot with such legends, जितने हम characters देख रहे हैं सब अपने आप में दिग्गज कलाकार हैं। So एक चीज अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि one thing which you guys have actually took from this entire series from these actors, कोई एक ऐसी बात, so क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैंने तो मतलब ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली जितनी ह्यूमिलिटी इन सब लोगों में है। मेरे बहुत सारे सीन्स हैं विद ऑल ऑफ दीज पीपल, स्पेशली मेरे फेवरेट सीन सतीश जी के साथ हैं। एंड मुझे आई वाज रियली अमेज्ड व्हेन ही वाज रिहर्सिंग द सीन विद मी एंड यू नो लाइक वो मुझसे पूछते थे मैं ऐसे करूँगा फिर तू ऐसे करना चाहती है या तुझे। So I was very surprised कि मैं नहीं हूँ सर, आप बताओ, आपको सब पता है। So I was really happy to see that he's so humble and सब लोग ही they were involving me so much as a newcomer. आप ऐसे हो जाते हो कि okay, like you want my input in this, like you think I can add something to this, which for me was really really nice. And off screen तो हम लोग बैठ के इनके किस्से सुनते रहते थे। Satish ji, Johnny sir, I remember was sitting at a couch, one of the sets पे and अपनी पुरानी किस्से के वो जब हम लोग आए थे बॉम्बे एंड हम एक रूम में रहते थे एंड द एंटायर जर्नी एंड ऑल्सो एक दूसरे का के लिए ना बहुत खुल के बोलते हैं ये लोग। कुणाल, I think Abhilasha, when you're working with people like this, it's not what you consciously are looking to learn या आप जो सीख रहे हैं। आप जब इन लोगों के काम करने का अंदाज देखते हैं या जैसे नुपुर ने भी when she shared these anecdotes, आपका दिमाग चल रहा है, आपका जहन वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। So unknowingly there is so much that you're learning from them just by observing them, just by being in their company, seeing their work ethic, just seeing that even at this stage we call them legends, we call them icons, but if you see Johnny Bhai specifically, he's one of the most hardest working actors on set. वो हर एक एक्शन कट के बाद बिटवीन टेक्स ही इज ट्राइंग टू डू बेटर, ही इज लुकिंग एट यू एंड सेइंग ये करेक्ट था, ये बराबर बैठा कि नहीं, एंड यू आर सिटिंग देयर एंड सेइंग यू आर आस्किंग मी, आई थिंक you just know it all, but he is still there as a student, and that like you don't really have to learn from anybody. I think that should be a lesson for all of us, that no matter how well we do in life, we're still learning, because they always say ना तुम जितने भी ऊंचे हो जाओ आसमान के नीचे ही रहते हो. So you always have to keep that awareness going. You're always learning from each other, and from them you'll see then there's no insecurity at all. It's never like कि अरे इसने ये जोक क्यों ले लिया या मैं ऐसा कर देता हूँ. They're always trying to better you. They're like कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ फिर तू ऐसा कर ले तो क्या ये पंच फटेगा. So for them the content is most important. It's like the joke needs to land. It's not important whether you're landing it or I am landing it. It has to work for the scene.
So all of those scenes, those are just work ethics that they have like down to the T. Right. Nupur, first series like film से पहले आपकी series आ रही है तो मतलब वो एक अलग feeling होगी. So how will you actually define that feeling? मैं तो बहुत खुश हूँ कि my debut is happening on OTT because as an audience मैं at this point binge करती हूँ. I watch OTT so much and I like my entire family and OTT बहुत बड़ा हो गया है. You know, देखते ही देखते because of content, like you know, like इतना अच्छा content आ रहा है इसलिए. So पहले तो वो and दूसरी चीज कॉमेडी एक नई स्पेस है मेरे लिए, एब्सोल्युटली नई स्पेस है. ये थर्ड चीज शूट करी थी मैंने, पर ये सबसे पहले आ रही है. तो फॉर मी ऑल्सो लाइक आई वाज कमिंग फ्रॉम 1-2 films that I shot for before this, so I was also like okay, like I used to find comedy very challenging. I still do. I think it's one of the toughest. So मेरे अंदर एक चीज ये थी that Nupur, you're too new. Like, do you wanna really dive into comedy right now because it is quite challenging. So, but then when that thing came in, कि you know, like अभी इससे better setup नहीं मिल सकता है. If you want to do comedy, then you rather start with the best people. So, I mean, I'm very honored to be working with all of them. अच्छा, you are mama's girl or daddy's girl? I'm mama's girl. I'm mama's girl, but मेरी मम्मा और मेरी सबसे ज़्यादा clashes होते हैं घर में. But like I know that's also because somewhere deep down our personalities are so alike. Like, you know, we both are rebellious, we both are like logical and this point and all, and अपने उस पे टिके हुए. So that's there. Okay, Kunal, what about you? Mama's boy or daddy's? I'm a lost boy. I mean, I think boys are generally their mama's boy because और मेरे भी झगड़े सबसे ज्यादा मेरी माँ से ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे समझती भी सबसे ज्यादा वो है. और I think dad is more. Dad, I get him. He understands me more. He's cooler, and my mom's always like that. She's always on that verge कि वो कभी भी गुस्सा हो सकती है, कभी भी emotional हो सकती है, and so that's why I think I'm a mama's boy because I'm more conscious that I don't want to upset her in any way. And when it comes to your little girl Inaya, so like वो किसके ज़्यादा close है, पापा या मामा? ये तो अब वो ही बता सकती है. मुझे मेरे ज़्यादा close है सोहा. But मतलब आपके और सोहा के बीच में ऐसे discussions होते होंगे, आपको लगता होगा, तो मतलब what will you say about that? देखिए, एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी के लिए आपको कुछ लड़ाइयाँ solve करने की कोई जरूरत नहीं है. ये बातें होती हैं. मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा क्लोज है, उसे लगता है उससे ज्यादा क्लोज. Okay, but touchwood, she's very cute and we love all the videos and pictures which we actually see online. Thank you. Okay, now talking about your favorite all-time favorite film. So वो ऐसी 3 comedy films अगर आप लोग मुझे बताओ. मेरी है पड़ोसन, अंदाज अपना अपना और दीवाना मस्ताना. Sorry, दीवाना मस्ताना. Oh yeah. Nupur? अंदाज अपना अपना, वेलकम एंड हेरा फेरी. Okay, talking about popcorn, so मतलब जब ये concept, जब ये series आप लोगों के पास आई थी, so what was your first reaction? Laughter, because वो फरहाद is one of the best narrators of any film or series because वो किरदारों की एक्टिंग करके उनके लहजे पकड़ के म्यूजिक बीजीएम के साथ अपना नरेशन देते हैं, जो which can be dangerous. If I ask you कि according to you which was your most favorite and funniest scene from Popcorn? You know, actually my favorite scene is not a funny scene. My favorite scene is the last scene that happens in episode 6, which actually encapsulates the entire messaging of what the show is trying to say in a very non-preachy way, and that's why it's my favorite because it's so simple and it's so heartfelt and it's so real that it was like I didn't feel the need to prepare for it. I just felt that if I just mean these words, the emotion will kind of convey itself. So he was so good. Thank you. But that was like the most special scene for me in the entire show.
Okay, that's great. And now let's move on to our game segment. Okay, before we close this interview. Okay, this is called My First. Okay, my first film. Okay, my first film was Hamara Pyar. Yet to come. My first crush. My English teacher in standard 4th, Karen Miss. Standard 4th, याद भी है. Nupur. ऐसे टीचर वीचर नहीं थे. Someone in my building only, but I'm not naming. Okay, let's move ahead. My first car. I think it was a Maruti Alto. I think I have not bought a car on my own. My first vacation abroad. पर वेकेशन क्या, मैं तो पहली बार शूटिंग में गया था बाहर. कल की शूटिंग में स्विट्जरलैंड देखा था मैंने. तो वही था मेरा वेकेशन भी, वही था काम भी वही था. And that was for which film? हाँ जी, कलयुग. मैं फर्स्ट टाइम गई थी मलेशिया. कृतिक का आईफा, जब उसको आईफा मिला था डेब्यू के लिए, वो देखने. That was my first. Okay, first goal that you achieved. First goal that I achieved. मैंने ना अपनी जो पहली साइनिंग में जो मिली थी उससे मैंने एक अपना टीवी लिया था, क्योंकि मुझे याद है घर में हमेशा वो झगड़ा होता था कि मेरे को ये देखना है, मुझे इतने बजे ये देखना है, और फिर वो बोलते थे जब बेटा अपना घर होगा अपना टीवी लाओगे ना तब जो मन करेगा देख लेना. मेरा पहला अचीवमेंट वही था. वो 10,000 का मुझे चेक मिला था, मैंने जाके सीधा उससे एक टीवी खरीदा था और वो लगाया था घर पे. बोला था इस पे जो मुझे देखना है मैं वो देखूंगा. Wow, Nupur. I think ऐसे proper goal तो नहीं याद, but I remember that I really worked hard in my 12th standard, and my motivation was my mother is a DU professor. She is a professor in South Campus in a college. My mother used to tell me, and ये इतनी बार उन्होंने सुनाया मुझे कि अच्छे नंबर नहीं लाए तो मेरे कॉलेज में ही आना पड़ेगा. I think that was my goal कि I don't want to end up in her college. She can't be my teacher. So my thing was I don't want to go to South Campus at all. So I just landed in North Campus. Number lucky. That was my motivation throughout. Okay, my first road trip. My first road trip. मेरी तो बहुत पहले हुई थी, मुझे याद नहीं है पहली कौन सी थी, बट मुझे याद है मैं अपने 2 दोस्तों के साथ महाबलेश्वर गया था, किसी को बिना बताए, और हमने जिसकी गाड़ी ली थी शायद उसको भी नहीं पता था कि उसकी गाड़ी हमारे पास. तो एक ऐसी रोड ट्रिप हुई थी. I think that was my first road trip. I think college के time पे only we went to Manesar like with a few college friends. हमने we bunked one day and हम 4 लोग गए थे, and रास्ते में I forgot the name, वो ऐसे कोई some ढाबा comes Delhi से Manesar के way में where like you get parathas and like you know Delhi, typical Delhi Punjabi food. So we had that. I think that was my first. Okay, last 2, but I'm just combining these questions. My first job and my first paycheck amount. मैं तो paycheck amount तो बता दिया मैंने आपको. 11,000 का चेक मिला था मुझे, but वो first नहीं है, because I used to also work as a kid, so that I don't even know वो क्या था, but I know this as an adult when I went to pay the paycheck. Understood. First job also in that way. My first job I think was at the age of 6 when I did like गुलशन गुलफाम करके वो टीवी शो था, उसमें मैंने छोटा सा किया था. I think that was my first so-called job. But again, my first job would be कलयुग as an adult after I finished college. क्योंकि ऐसा लगता है ना अब पढ़ाई हो गई, अब नौकरी लगी. Nupur? College के बाद immediately I got placed. I did 8 months in Delhi duty free में as a marketing management trainee. Oh, nice. So I think 30,000 per month, I think. Okay. Yeah. Okay, that was lovely, and all the very best for Popcorn. Thank you. Thank you. 92